Good morning, my dear students. Students, from today onwards, we are going to learn one more subject, and that is our drawing subject. बच्चों, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है? यस, सबको ड्राइंग करना अच्छा लगता है. उसमें कलर करना आपको अच्छा लगता है ना? यस, तो आज से हम लोग ड्राइंग का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ओके, so first I am going to show you all in our today's lecture is name plate. Okay, so students, पहले स्टार्ट करने से पहले I will tell you all what materials you will need for today's lecture. Okay, so we will need a scale. You all can use a small scale or else you all can take a bigger scale also. Then a pencil, eraser, wax color or your oil pastel colors also. ओके, आपके पास ये कलर्स होंगे, आप ये कलर्स यूज करो, या जो ऑयल पेस्टल कलर्स आते हैं आपने वो यूज किए तो भी चलेगा. बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज वाटर कलर्स. आप वाटर कलर्स यूज नहीं करेंगे. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी ड्राइंग इट इज कंपल्सरी टू क्रिएट मार्जिन फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स. चारों साइड से आपको मार्जिन क्रिएट करनी. ओके, सो हम लोग स्केल रखेंगे and with the help of scale and pencil we will start marking the margin. आपको स्केल यूज करनी है मार्जिन बनाने के लिए. आपको स्केल यूज करनी है. विदाउट स्केल आप मार्जिन नहीं बनाओगे. ओके, it is compulsory to use margin, use scale for the margin. Students, after margin we will write a today's date in left side corner. Okay, okay. After today's date, we will write a topic name, and today's our topic name is name plate. Okay. Okay. So first, what we did? We did the margin from all the 4 sides. And students, this you are going to do on your right hand side page. Okay, left hand पे नहीं करना. आपके ड्राइंग के बुक में आपको वो राइट हैंड साइड पे करना है. ओके, आफ्टर मार्जिन वी रोट द डेट. आफ्टर डेट we wrote our today's topic name, and topic name we wrote up on the margin. Okay, so now students, with the help of scale, lightly we are going to mark line. Lightly you are going to mark. Okay, one line, second line, third line, fourth line, and last 5th line. Okay, so now students, in this I am going to show you all my name.
बच्चों इसमें मैं मेरा नाम लिखूंगी, पर आप मेरा नाम नहीं, आप आपका खुद का नाम लिखोगे. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू राइट माई नेम, यू आर गोइंग टू राइट योर नेम. ओके ओके. तो अभी हम लोग स्केल लेंगे और स्केल से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे. बट स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू first draw it lightly, then you are going to darken. Okay, then we will see how we can fill color in a nameplate. Okay, so let's start. Okay, so my name is Larissa, so I have LARRISA. I have total 7 letters in my name, so I'm going to fit 7 letters in my 5 line. Okay, so with the help of scale we will start doing. So we are going to mark a straight line, then we will darken it. सो माई फर्स्ट लेटर आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट लेटर एल लिखा है. मैंने मेरा ये स्केल यूज़ की है मेरा फर्स्ट लेटर लिखने के लिए. अभी स्टूडेंट मेरा नाम बहुत बड़ा है, मेरे वर्ड्स बहुत बड़े 7 वर्ड्स हैं. वो अगर यहाँ पे फिट नहीं होंगे तो मैं वो थोड़े से जो बचेंगे लेटर्स, वो लेटर्स को मैं नीचे लिख दूँगी. ओके, so after L my other letter is coming, A letter. So now we are going to create letter A. See students, first I am doing it light. अगर वो perfect आ रहा है तो मैं उसको dark कर रही हूँ. So you will also first do it lightly. A. See students, I have written word letter A. After L, I have written letter A. Now I am going to write letter R. Okay. See students, our letter R is also done. So again in my spelling, letter R is repeated. So the same R I am going to do it again. Okay. First we are going to mark a straight line. Then one line from upward. Just like this. And from there we are going to bring inside like this,
And from there again down. See students, our letter R is also done. So our total 4 letters are done. 1, 2, 3 and 4. My second another letter is I letter. So now I am going to write letter I. Two straight line, then we are going to touch the line. From here again one straight line. Okay, so we are done with I also. Now we are going to write S. Okay, for S, see how I am writing, you will also write the same way. First mark a line like this. If आपके स्पेलिंग में S आता होगा तो ओके. Then we are going to mark a line from here in cross in slanting position. Okay. Then again we are going to take the line downwards. And from here we are going to mark a U like this. Okay. Then again a straight line. See students, our S is also done. Now my last letter is remaining, that is A letter, which I can write over here. Okay. So we will write the same way. स्टूडेंट्स, आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे और 2-3 लेटर्स लिख के दिखा रही हूँ. ओके. अगर आपका कौन सा वर्ड इसमें नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो. ओके. सो फर्स्ट आई विल राइट लेटर टी.
See students, I have written the letter T. Now I will show you letter M. Okay, the letter N. Now we will show you letter U. So the letter U. Now students, we will start coloring our name with the help of our colors. Okay. So students, for my name coloring I will use two colors, that is red color and yellow color. With the help of two colors I am going to complete my coloring. And students, always you have to color in one direction only. You are not going to change the direction. Okay. So now with the help of red color, I am going to color the name. So see, my letter L is done. Now the same color I am going to use for R also. As you all can see, I have left the letter A because there I am going to use yellow color. One red color, one yellow color. Like this I am going to apply the colors. Okay, now I am going to use the same red color for letter I also. आपको जो कलर देना है आप वो कलर दे सकते हो. द कलर्स विच यू विल लाइक you all can give that color also. It's not compulsory that you have to give these two colors only. Okay, so we are done with red color. Now we are going to use a yellow color. And the remaining letters we are going to do with yellow color.
And the same for our letter S also. Okay, so we are done with our name plate.